Yes, the chapter A Question of Trust. Now we have to go through the complete video to understand the chapter and it will be clear very well. Now, what is Danby? This is the name. What is Danby? ये name है had a good reputation in the society. That means it very well. It is very clear that Horace Danby is a person and had a good reputation in the society. He was about 50 and unmarried. That means age is 50 years and he was unmarried. He made locks, ताला बनाया करता था and had two helpers. He was well and happy. That means helper name is well and happy. Now it is very clear Horace Danby, this is the name, and he had two well helpers. Name was well and happy. But he had attacks of hay fever in summer. But he was not completely honest. He had served his first and only sentence in a prison library. He had a passion for books. उनकी जो लगन थी वो बुक्स में बहुत ज्यादा थी, किताबों को पढ़ने में. He loved rare and expensive books. Horace Danby robbed a safe every year. He stole enough to last for 12 months. He secretly bought the books he loved through an agent who was now out on committing a robbery. For 2 weeks, Horace had studied the house of Shotover Grange. He had to burgle this house. It had 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. He intended to buy three interesting books coming up for sale in the autumn. He had seen where the housekeeper hung the key. वह वही सर्च कर रहा था कि आखिर उस घर की जो ताले की चाबी है, जो लॉक का जो की है, वो आखिर कैसे अवेलेबल हो पाएगा कि आने वाले सीजन ऑटम सीवर में जो उनकी जो इंटरेस्टिंग बुक है वो उससे खरीद सके और खरीदने के लिए जो पैसे हैं वह उसे ग्रेन शेप से मिल जाए. These were the rooms, the electric wiring, path and garden before the theft. यानी चोरी करने से पहले उससे बहुत रास्ते से वहां तक जाकर के पहुंचना पड़ेगा. Now, then he heard a voice. The voice told him that he could cure the sneeze. It was the voice of a man. She stood in the doorway. She was young and pretty. She was dressed in the red. रेड कलर की ड्रेस पहन करके बहुत ही जवान और सुंदर लेडी वेट कर रही थी. दैट मीन्स वो डोर वे पे थी, दरवाजे वाले रास्ते में थी और वहां से एक आवाज उन्हें सुनाई दिया. She said that she had come back in time, but she had not expected to meet a burglar. The young lady very confidently asked Horace what he was doing. His first thought was to run. The lady told him that she would telephone the police. उन्होंने बोली कि ऐसा कि पुलिस के टेलीफोन करने के बाद जब बताई, she would tell it about him. Horace Danby told her to let him go and forget she ever saw him. उनको ऐसा कन्विंस किया गया कि आप ये बोलना कि आपने कभी देखा ही नहीं. But the lady laughed and he begged her. He promised her never to commit a burglary if she let him go. Now, on the third day, Horace thought of the books which he wanted. He would have to look for another safe, but he never got a chance to burgle another safe. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. Danby's fingerprints were all over the room. Obviously, होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने वहां लूटिंग करने गया था
तो बिल्कुल वो जहां जहां पर टच किया होगा उनका फिंगरप्रिंट्स होगा। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, वो ग्लोव्स यूज भी नहीं किया था, तो उनके फिंगरप्रिंट तो होगा। He told the police that the landlady of the house had asked him to open that safe, but the landlady herself was a gray-haired woman of 60. अब वो पुलिसमैन को अपना स्टेटमेंट बता रहा है कि जो लेडी थी वो ग्रे हेयर्ड की लेडी 60 साल की, लगभग 60 साल की थी, और उन्होंने मुझे बताई और मुझे बोली क्या कि सेफ को ओपन करने के लिए तब मैंने किया। She said the story of Danby was nonsense. Horace is now the assistant librarian in the Persian. उस समय उन्हें बुक से ज्यादा प्यार था और वह बुक खरीदने के लिए क्या क्या नहीं प्लानिंग किया, बहुत सारा कुछ प्लानिंग किया। He often thinks of the charming and clever young lady she was in his profession. She had simply tricked him. Danby gets angry when anyone talks about honor among thieves. कभी भी कोई यदि बात करती है वही चोरी की, उनका स्टार्टिंग बाय प्रोफेशन ही वाज अ थिफ, यस, और वो जो कुछ भी चोरी करता था और उसका जो मेन यूटिलाइजेशन जो था वो बुक खरीदने में था, क्योंकि वो बुक से बहुत इंटरेस्ट रखता था, बहुत लाइक करता था, चाहे वो कितनी भी कीमती बुक हो। आज के डेट में वो, दैट मीन्स आज, आफ्टर, एट लास्ट द स्टोरी, वो लास्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी बना, लाइब्रेरी के इंचार्ज भी बना। एंड आज यदि कोई उनसे बात करता है चोरी का तो बिल्कुल वह गुस्सा हो जाता है। ऑनर अमंग थीव्स। द लेडी हैड बाय नाउ impressed him that she was the landlady. She put one condition for letting Horace go. She had made up a false story to trick in Danby. She told him that she had promised her husband to take her jewels to their bank. She had, however, left them in the safe. She told him she wanted to wear the jewels in a party that night. She came down to get them, but she had forgotten the numbers to open the safe. Horace assured her that he would open the safe for her. उन्होंने ऐसा सोचे कि उनके हस्बैंड तो आए नहीं और उनको पार्टी में जाना है और ज्वेलरी यूज करना है, पहनना है, तो इट विल बी बेटर कि जो मैं पासवर्ड भूल गई कैसे लॉक को अनलॉक करूं, इट विल बी बेटर कि सबसे अच्छा यही उपाय है होरेस को मैं बोलूं ओपन करने के लिए। सो ही ओपन द सेफ विद इन एन आवर, और इसीलिए उस लेडी के कहने पर होरेस ने क्या किया, तो शेफ को 1 घंटे के अंदर ही ओपन कर दिया एंड गिव द ज्वेल्स टू हर, और वो ज्वेल्स उसको दिया। किसको दिया? लेडी को, सो दैट शी कैन गो इन द पार्टी विथ ज्वेल्स, गहनों से, गहनों को पहन के, ज्वेल्स को पहन के वो जा सके। थैंक यू।